Hello students, welcome to the class, and I hope the chapters that we are doing, this fourth chapter, agriculture, is important from the board point of view. I have discussed it in the last class also. So we will be doing it in detail. Wherever you are facing problems, you can discuss it with me at any point of time. You're most welcome to do that, as we are having the online sessions also. So I always tell you to ask me questions and get your doubts cleared then and there. Don't wait that when the chapter will be over, then only you will be getting your doubts cleared. No, that's not the correct method. जैसे जैसे टॉपिक्स होते जा रहे हैं, as along with that only just keep your doubts getting cleared. It would be beneficial for you also, for me also. Suddenly what happens is that the topic that we have done, when you are watching that or when you are seeing that, you ask the question, it is very easy to sort it out. We can do it in a very simple manner. This is what I wanted to say. So we were talking about the fourth chapter, agriculture, and I told you that झूमिंग पे आपको notes तैयार करना है. You have to prepare your notes on झूमिंग for 3 marks. You will be able to do it. बहुत simple है. स्लैश एंड बर्न है, मतलब एक जगह पे लोग रहते हैं, दे जस्ट कल्टिवेट ऑन दैट फील्ड फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. And slash and burn technique, the trees that are there, they just burn those trees, and in that place they in those ashes they grow the crops. Jhum cultivation is the primitive mode of agriculture. What we were discussing is the points that we were discussing was the primitive subsistence agriculture. जो सबसे पुराना मेथड है एग्रीकल्चर का, उसमें झूम कल्टीवेशन इज वन ऑफ देम. Got it? So you need to mention about it, the primitive subsistence farming. Now what happens, children? ये हमने किया, इसमें you have seen, we have discussed one example of Rinjha. Rinjha was living in Assam, and on a piece of land, on a patch of land, they are doing the cultivation, they are doing all the agricultural processes are being carried on, and in irrigating the fields with water running through a bamboo canal, in the Assam region we find lot of use of bamboo. बांस बहुत मिलता है वहां पे. आई मीन बैम्बू इज वेरी इजिली अवेलेबल, सो पीपल टेंड टू यूज बैम्बू ऑन अ वेरी लार्ज स्केल. काफी सारा बैम्बू वो यूज करते हैं फॉर वेरियस पर्पसेस. तो छोटे छोटे कैनाल्स बना लेते हैं. आई मीन वाटर इज अवेलेबल, ब्यूटिफुल प्लेस असम. तो इफ वाटर इज फ्लोइंग कंटिन्यूअसली, पानी अगर गिर रहा है तो पानी को अपने खेतों तक लाने के लिए वो दिमाग लगाते हैं, एंड फ्रॉम देयर दे गेट द वाटर इन अ वेरी simple manner. हम जो सोच भी नहीं सकते हैं, they do that and they procure the water for their fields whenever they want that. Okay, just it was just coming to my mind, so I thought I would be discussing. Then the next thing that we need to understand is chapter 4. I'll write it here only, agriculture. ओके, नाउ दूसरा पॉइंट कौन सा है? व्हाट इज द अनदर नेक्स्ट पॉइंट? थोड़ी सी जगह कम है, चलो, बट वी विल एडजस्ट. आई एम एडजस्ट. ओके, नाउ व्हाट हैपेंस, द रिंझा का जब हमने एग्जाम्पल लिया, द टाइप ऑफ फार्मिंग रिंझा's फैमिली इज एंगेज्ड इन. क्या आप बता सकते हो? हम जब वी आर टॉकिंग अबाउट झूमिंग, and when we are talking about slash and burn, so the fertility of the soil is continuously declining, and they wanted a fresh patch of land where they can do the cultivation in a very proper manner. तो they should always keep on shifting. तो एक तरह से ये जो हम रिंझा का जो एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं, this is about the shifting cultivation only. Okay, ये तो था, this was the primitive subsistence agriculture. The next point that we are discussing is intensive subsistence agriculture. Okay children, intensive subsistence agriculture, another method
of growing crops. Now understand that in the intensive, पहले तो इंटेंसिव का मतलब समझो. इंटेंसिव मीन्स जहां पे बहुत हाई पॉपुलेशन है. First thing, this kind of an agricultural system is practiced at a place with high population. Okay? कहाँ पे होता है आपको ये मेंशन करना है. You start your answer for intensive subsistence agriculture where there is high population pressure. तो labor intensive farming, it is called as the labor intensive farming, जहाँ पे biochemical inputs are there, irrigation are used for obtaining higher production. थोड़ी सी जमीन पे ज्यादा एग्रीकल्चर करना है. You don't have, because population is there, बहुत ज्यादा population है. So for a large population, crops that are to be grown or agriculture that is to be practiced, it is to be in a manner where from very less we are getting, from very less input we get maximum output. Okay, we need to understand that. इसको हमको समझना पड़ेगा कैसे करते हैं. The places where such farming is practiced in India में intensive, where are we practicing intensive subsistence farming. Okay, वही बात है, जमीन कम होता है लेकिन आपको आउटपुट ज्यादा चाहिए. तो टेक्निक यहाँ पे what happens is कि ट्रेडिशनल जो प्रिमिटिव मेथड है, प्रिमिटिव मेथड से काम नहीं चलेगा. The people who are engaged into agriculture, they need to adopt methods which can really bear fruits, which can really give maximum output with minimum input. कम से कम में ज्यादा से ज्यादा. बार बार मैं आपको इसलिए बता रही हूं that you have to understand that इंटेंस काम होना चाहिए. काफी काम करना पड़ेगा ना, बिकॉज इनपुट आप यू आर नॉट गिविंग मच इनपुट, ज्यादा आप इनपुट नहीं दे रहे हो लेकिन आपको आउटपुट ज्यादा चाहिए. तो some of the states where it is practiced, such farming is practiced. कहाँ पे आप बता सकते हो? Yes, उत्तर प्रदेश, you can say Bihar, you can say MP. All these high population area, please try to understand. And in India we have one thing that is very common. Here we are talking about socio-cultural causes, social and cultural causes. इसमें क्या होता है ना, देयर इज द राइट ऑफ इनहेरिटेंस. ओके, जो पिता है, पिता का जो जमीन है, आई मीन द लैंड विच इज इन द नेम ऑफ फादर, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द सन्स. अभी एक आदमी है, उसके पास 4 acre ऑफ लैंड है. ओके, नाउ इफ ही हैज 4 acre ऑफ लैंड, ही हैज गॉट 4 sons. तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में 1 acre लैंड विल गो टू ईच एंड एवरी सन. तो सक्सेसिव जेनरेशंस जो है इसको, अब वो 1 acre ऑफ लैंड जिस बेटे के पास गया, उसके आगे 3 बेटे हैं. दैट 1 acre लैंड विल बी अगेन डिवाइडेड इनटू दोस 3 sons. आर यू अंडरस्टैंडिंग? दैट इज द मेथड दैट वी आर फॉलोइंग, जिसमें क्या होता है कि लैंड होल्डिंग्स बिकम लेस डे बाय डे. जो लैंड होल्डिंग्स ज्यादा थी, द लैंड होल्डिंग्स दैट वर अन ग्रेट अमाउंट, नाउ इट इज बिकमिंग लेस. It is because of this social cultural cause, because of the right of inheritance. In case father has passed away, who will be looking after the land that belongs to father? पिताजी की जो जमीन थी. So agriculture ऐसी जगह पे where we are strictly following the law of inheritance, father's land being distributed to the sons, वहां पे इस तरह की फार्मिंग बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है. इनॉर्मस प्रेशर ऑन एग्रीकल्चरल लैंड, थोड़ी थोड़ी जमीन पे बहुत सारे लोग लगे हुए हैं. एंड नाउ अगेन आई एम कनेक्टिंग ज्योग्राफी टू इकोनॉमिक्स. रिमेंबर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, है ना? आपको लग रहा है आप काम कर रहे हो ऑन अ हाफ acre ऑफ लैंड, 10 people आर वर्किंग. क्या जरूरत है? 2 आदमी भी तो वहां काम कर सकते हैं. 2 people कैन ऑल्सो वर्क देयर. But then 10 people are involved in that piece of land. So agricultural land में this kind of a thing is very common. Okay, intensive. Then another thing is, what is the next
थिंग. हमने प्रिमिटिव कर लिया, हमने इंटेंसिव कर लिया. नाउ कम्स द कमर्शियल फार्मिंग. कमर्शियल फार्मिंग, ओके. पीपल आर अर्निंग लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ दिस. थोड़ा सा भी जिसके पास पैसा होता है ना, एनी फार्मर हु हैज गॉट लिटिल बिट ऑफ मनी, एक्स्ट्रा मनी, ही ऑलवेज थिंक्स कि कुछ ऐसा कमर्शियल करें, कुछ ऐसा काम करें जिससे कि ज्यादा इनकम हो. ओके, so what we are talking about is commercial farming. How does this happen, and what are the benefits of commercial farming? Main characteristic, सबसे ज्यादा जो commercial farming में the thing that is very well known and that is very very much practiced in the commercial farming is the use of modern inputs. Modern inputs are there, or you can say that technology is more used in this kind of a farming. आपको ज्यादा पैसे चाहिए, more money is needed, तो you need to invest it a little bit ना. थोड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ज्यादा मनी मिलेगा. So what do the farmers do? They use HYV seeds. अभी ये तो 9th क्लास में पढ़ चुके हैं. व्हाट इज HYV सीड्स? हाई यील्ड वेराइटी सीड्स. ओके, एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, हायर प्रोडक्टिविटी के लिए. तो यहां पे क्या हो रहा है? HYV सीड्स आर देयर, देन यू हैव इंसेक्टिसाइड्स, ओके, पेस्टिसाइड्स. All these things are used for commercial farming. Commercial farming में automatically ये सारी चीजें यूज होनी ही होनी है, because investment is also high. ज्यादा पैसा लगाया है तो ज्यादा पैसा भी चाहेंगे. The people who have invested more money, they want more money. है कि नहीं? ये तो है नहीं ना कि इन्वेस्टमेंट पूरा कर दिया है एंड कम भी पैसे आ जाएंगे तो चलेगा. नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलता है. ओके, सो commercialization of agriculture is there. Got it? It is a commerce that is involved here. Lot of money involvement. जहां पे money की बहुत involvement हो जाती है, where more of money involvement is there, then that is called as the commercial agriculture. Commercialization of agriculture, and it is also varying from one region to other. बहुत जगह पे इसका बहुत तरीके का रूप हमको देखने को मिलता है. We find it majorly with the states which are involved in this kind of a farming, in commercialization of crop, is Haryana and Punjab. Please remember the names, Haryana and Punjab. Okay, so these are the states where commercial farming is on a very large scale, like rice. अभी कमर्शियल फार्मिंग यहाँ पे किस चीज की हो रही है? राइस. यू नो, हरियाणा एंड पंजाब, बोथ दीज प्लेसेस आर फेमस फॉर द राइस. ऑल दैट, वो जो आपके घर में जो बासमती चावल आता है ना, दिस बासमती चावल का द मेजर प्लेस वेयर इट इज बीइंग ग्रोन इज हरियाणा एंड पंजाब. पंजाब के तो बासमती राइस इज वेरी फेमस. सो राइस इज द कमर्शियल क्रॉप हरियाणा एंड पंजाब में. लेकिन उड़ीसा में इट इज अ सबसिस्टेंस क्रॉप. उड़ीसा में क्या है? राइस इज अ सबसिस्टेंस. लोग वहां पे, द पीपल, बिकॉज हरियाणा एंड पंजाब, दे ईट रोटी बट दे ग्रो राइस. चावल की खेती करते हैं लेकिन खाते रोटी हैं. हाँ, वीट, दे ईट वीट. It was just coming to my mind because I have been I have seen them very closely, the people in Haryana and Punjab. That's why I was just sharing it with you. That commercialization of crop they have done for rice, but they are for their own subsistence purpose, they are using wheat. रोटियां खाते हैं. उड़ीसा में it is a subsistence crop. राइस के बिना उड़ीसा में चलेगा ही नहीं लोगों का. People survive on rice. तो राइस इज द स्टेपल क्रॉप देयर इन उड़ीसा. गॉट इट? तो इस तरह से यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू सेग्रीगेट कि कहां पे किस क्रॉप का क्या इंपॉर्टेंस है. ओके,
then you will be finding that commercialization of crop. When we talk about the commercial crops, तो commercial farming में another important thing that is there is हरियाणा एंड पंजाब हमने बात कर लिया है. Okay, so commercial farming we are talking about, and now one thing that is very popular and very common for the commercial farming is the way of plantation. Got it? प्लांटेशन जो हम करते हैं, प्लांटेशन कमर्शियल फार्मिंग में प्लांटेशन इज अ वेरी कॉमन मेथड ऑफ फार्मिंग. बहुत ज्यादा तो मैं क्या बताऊंगी आपको, यू नो अबाउट इट. 9th क्लास में यू हैव रेड अ लॉट अबाउट प्लांटेशन. 8th क्लास में भी पढ़ा होगा. This is a very common phenomena that you have studied in other classes, in the previous classes. As you know, the major feature of plantation, a single crop is grown. ठीक है, सबसे पहला पॉइंट जो आता है that is a single crop is grown. Okay, so large area में single crop and plantation has an there is agriculture and industry, both the things go hand in hand. For plantations, it is for plantations only, not for other crops. Okay, so for plantations what happens that agriculture and industry both go hand in hand, साथ में ही चलते हैं. And large tract of land में you will find plantations जब होते हैं, capital intensive inputs, काफी पैसा लगता है, lot of money is involved for laying down plantations. Lot of laborers keep on working here round the clock. सारे टाइम ही लगभग काम होता है. Most of the time the work happens. Laborers are there. So all the produce that is there is used as raw material in the industries. ठीक है, all the plantation में the things that are being grown वो directly it doesn't come to the market. Plantation crops, always keep it in mind, these plantation crops are the raw material for the industries. तो suppose टी plantation है, एक तरफ चाय के बागान है एंड दूसरी तरफ इंडस्ट्री है. टाटा वालों ने क्या किया है, आसाम में इन द आसाम इन केरला कॉफी की इंडस्ट्री है, वो है प्लांटेशन है, कॉफी प्लांटेशंस आर देयर, टी प्लांटेशंस आर देयर. उसके ठीक बगल में आप देखोगे बड़ी सी इंडस्ट्री है, बिग इंडस्ट्री. होल डे द लेबरर्स व्हाट डू दे प्लक द लीव्स, टी लीव्स ना, टी चाय के जो बागान होते हैं वहां से पत्ते तोड़ के, एंड देन इट इज सप्लाइड टू दीज इंडस्ट्रीज. वहां पे जाके देन इट इज पैकेटिंग एंड उसका फिनेस इज डन, एंड देन फर्दर वर्क इज डन ऑन दैट लीफ, टी लीफ. तो all this produce is like a raw material in the respective industry. Plantation में कौन कौन सी the major crops that are grown in the plantation, you know it very well. फिर भी just for your reference I am just mentioning tea, coffee, or what else do you think, rubber or sugarcane. Yes, sugarcane में भी you will find the sugarcane. sugarcane के बीच में आपको आम का पेड़ नहीं मिलेगा. Plantation means just one type of a crop all over. जहां तक आप देखेंगे वहां तक आपको you will just find one crop only. You will not find the different crops at one place. Okay, so sugarcane. One more crop is missing here is banana. Okay, these are all the plantation crops, very famous. Tea in Assam and North Bengal, coffee in Karnataka. Tea in Assam and North Bengal, it is the tea plantations you will find in abundance in Assam and North Bengal. Then coffee plantations are there in Karnataka. Okay, so when we talk about tea, तो एक ही one state we think about is Assam. कॉफी की बात करते हैं तो इट इज साउथ में ही है. मेजरली यू गेट ऑल द गुड क्वालिटी कॉफी फ्रॉम द साउथ, सो इट्स कर्नाटका. ओके
उसके बाद since production is mainly for market, people who are growing the tea na plantations में जो टी grow कर रहे हैं, they don't take all the tea in their home. जैसे दाल चावल है, like the rice and the wheat and the pulse, if it is grown in the field, काफी सारा it is for the self consumption, but this is not the same for the tea and the coffee. Are you getting my point? Yes, that is there, children. So it has to be taken to the market तक ये सारा सामान कैसे जाएगा? How will all this now commercial farming में the other important phenomena that is involved is tea grow कर लिया, coffee हो गया, sugar cane, all these things have been grown in the plantation. It is to be taken to the market. So the next important thing that is involved here is transport. Okay, children. Transport is important. Nowadays, communication is also important. Communication. People need to communicate with each other. सामान जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, कितना सामान है, कहाँ से कितना लेना है, all these things are there. Well-developed network of transport is needed for commercial farming and communication connecting the plantation areas, processing industries. Okay, I told you that near the plantations you will always find industries. Industries are there, okay? So, markets also play a very important role in the development of plantations. Markets इसके बाद आपको चाहिए, the people now need markets also. कहाँ ले जाएंगे? Where will they take all these products? जितना भी टी कॉफी है, it will go to the market. So these are the other requirements that are connected, that are needed in the commercial farming. This is one thing that we have done. So this was all about whatever we have discussed till now is the types of farming. The different types of farming we have discussed is, पहला क्या था? Subsistence farming. We discussed about it. Primitive subsistence farming. बहुत मतलब it is being practiced from the very ancient times. So primitive subsistence farming is there. Then you find another important form of farming is the intensive subsistence farming. बहुत छोटी जमीन पे ज्यादा काम, ठीक है, on a small land holding, more of work, more of input. Intensive subsistence farming. Got it, children? उसके बाद जो हमने डिस्कस किया, that was the commercial farming. So these were the types of farming. Please remember these. Okay? Already we have done it. आप इसको अच्छे से याद कर सकते हो. Now what we are discussing, children, here is the cropping pattern. The next important aspect that we will be discussing now is the cropping pattern. Okay? How many types of crops are there? Cropping pattern. कहाँ पे कौन से crops grow हो रहे हैं? Which crops are grown in which area? This we will be discussing. एक तो we need to understand, यहाँ पे एक दो चीजें और हैं जो आपको समझना है, which you need to understand. वो क्या है? That India has got lot of physical diversities. North का physical features are different from South. East is very different from West. West में desert है तो East में forest है. Are you understanding? I'm talking about the Indian landscape. So when we discuss about the Indian landscape, now try to understand कहाँ पे कौन से crops grow हो रहे हैं. Which kind of crops will be grown in which area? That is another feature. तो agricultural practices that are there in India, India में जितने जगह पे भी whatever agricultural practices are there, उसमें we have various types of food, fiber crops, the crops that are being grown, vegetables, fruits, spices, condiments, spices के साथ the different small products that are there, उसको भी हम इसमें include कर सकते हैं.
etc. constitute some of the important crops that are grown in the country. तो इसमें major thing that we will be discussing about is the different types of crops that are grown in different seasons: Rabi, Kharif, and Zaid. Okay, children? We will be understanding the main features of the cropping pattern that we follow in India. इंडिया क्या, इट इज इन द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो. पूरी दुनिया में ही ये फॉलो होता है, खाली नाम अलग अलग है. इट इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स. सो रबी, Kharif and Zaid, we will be discussing about it, children. So today we have completed one of the very important topics, that is the types of farming that we practice in India. Now cropping pattern, we will be discussing it in the next class. Okay, children? A few points are there that I just wanted to show it to you. I'll be just discussing it now, children. Students, just now I told you that I wanted to point out certain things that we have done from the book. आपको पता होना चाहिए what all points we have done. So I'm just telling you that today we have done intensive subsistence farming, where we have understood that it is found, this kind of a farming is found in the places where we have high population pressure. बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जहाँ पे है, लेबर इंटेंसिव फार्मिंग हैपन्स एंड बायोकेमिकल इनपुट्स, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट फ्रॉम लेस लैंड एंड इन लेस टाइम. तो दैट मेक्स इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग very common and very popular in some of the regions where we have very high population. यूपी आप ले लो, बिहार ले लो, all these places where we have, वहाँ पे intensive farming होती है, subsistence farming. Then why this kind of farming happens? Because of the right of inheritance. Division of land happens, ठीक है, father to son, then from son to son, and then to the grandson, and this way the land holdings, big land holdings that are there, it gets into a very small portion. बहुत छोटा हो जाता है, जिसके वजह से कि वी फेस लॉट ऑफ द फार्मर्स फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड दे हैव टू गो फॉर इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग. देन चिल्ड्रन, व्हाट वी हैव टॉक्ड अबाउट इज़ द कमर्शियल फार्मिंग. बहुत सिंपल था, हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की. इसमें कमर्शियल फार्मिंग में वी हैव अंडरस्टूड दैट व्हाट आर द नेसेसरी एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर कमर्शियल फार्मिंग. ये हमने देखा, वी हैव अंडरस्टूड. Then we understood that rice is the commercial crop in Haryana and Punjab. It is a commercial crop in Haryana and Punjab, लेकिन उड़ीसा में it is a subsistence crop. उस subsistence crop में नहीं, वो staple crop है उड़ीसा का, rice. तो that is the difference. Then we have understood about the commercial crops that are there. Commercial crops majorly happens in plantation. प्लांटेशन जहाँ भी लगाते हैं वहाँ पे these kind of crops are grown, and agriculture is there and industry is there, and plantation happens on large tract of land. We have done it. All produces raw material in all the and what all are the crops included in the commercial crops: tea, coffee, rubber, sugarcane, banana. And Assam, North Bengal में coffee in Karnataka, tea is there in Assam, coffee is grown in Karnataka. So production is mainly for the market, and a well developed network of transport is there, communication is there, needed. Commercial crops, when the people are growing, they need these certain criterias for the commercial crops. ग्रोइंग द कमर्शियल क्रॉप्स. प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पास में चाहिए, जहाँ पे चाय के बागान हैं, पत्तियाँ टूट रही हैं और फिर सीधे इंडस्ट्री में जाके पैकेटिंग एंड ऑल दीज थिंग्स. लॉट ऑफ स्टेप्स आर देयर फॉर ब्रिंगिंग इट टू द मार्केट. देन वी डिस्कस्ड अबाउट
Cropping pattern is the one thing that we have to discuss, and we will be starting it in the next class. क्या क्या हमने डिस्कस किया था? रबी, खरीफ एंड जैद. When is it grown, what is the cropping season, what are the major criteria in growing these crops. तो ये हम जो है we will be discussing it in the next class. ठीक है children? तो just I wanted to show you this thing. Now we will be carrying on in the next video. Thank you children.